Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is the modern period. Learning topics, beginning of the modern age, sources for the modern period. Beginning of the modern age. It is a known fact that history is divided into three periods, viz. Ancient, medieval and modern. But the time frame of each period is not uniform. So history तीन parts में divided है, एक है आपका ancient, medieval and modern. In India, the death of Aurangzeb in 1707 CE is considered as the end of Mughal period and the beginning of modern age. But in European history, modern age began in the 16th century. None of the periods are alike in history. The way the people in the past lived was different from the lifestyle of men today. The historians have divided history into three periods to differentiate the features of society, economy, culture and politics of each period. तो औरंगजेब की डेथ के बाद आपका मुगल पीरियड खत्म हो चुका था और उसी के साथ साथ मिडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो चुकी थी और उसके बाद शुरू हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री. The modern period started in the 18th century. It certainly brought a lot of changing trend in the society. Such changes were noticed in Europe first. It later made its impact in India. तो 18th century में आपका modern age start हो गया था. सबसे पहले जो changes देखना start हुए थे वो यूरोप में हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे इसका impact इंडिया पर आने लग गया था. Quick facts. History is a record of people, places and events of the past arranged in a chronological order. तो history एक वो subject होता है जिसमें आपके past के सारे events, dates, सब के बारे में एक जगह पर आपको information chronological manner में given होती है. Modern period in Indian history. Time frame. It was only in the 19th century that the feeling of nationalism appeared in India. However, there were other dramatic changes that could be noticed in the Indian scenario much before that. By the beginning of the 18th century, the face of the economic and political structure in India had started to change. With the establishment of the British rule in India, by 1765, these changes actually became visible. The 18th century, therefore, was termed as the beginning of the modern colonial period in India. These changes were as follows. तो 18th century में आपका एक्चुअल में आपका पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था. यूरोप में स्टार्ट हुआ था, इंडिया में उसके बाद आना शुरू हुआ था और विजिबल चेंजेस आपके इंडियन हिस्ट्री में 19th century के बाद स्टार्ट हुए थे. The great Mughal dynasty had started to decline. The Mughal administration has lost its vigor due to new problems which emerged within the Mansabdari सिस्टम. आपका मुगल सिस्टम भी धीरे धीरे अपने सारे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक जितने भी उनके एस्पेक्ट्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन पे आने लग गए थे और वो भी खत्म होने लगा था. औरंगजेब, द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, हैड डाइड इन 1707. द लेटर मुगल रूल्स वर वीक एंड इनइफेक्टिव. They did not enjoy the loyalty of their subjects who assumed the new role of king makers. उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बाद जितने भी उनके रूलर्स आए थे मुगल डायनेस्टी में वो सारे के सारे कमजोर और इनइफेक्टिव थे. जितने भी सब्जेक्ट्स या क्राउड या पीपल थे वो उनको रूलर नहीं मानते थे. The spread of mercantilism and capitalism in Europe had led to the creation of trading companies which were out to capture economic power in the backward nations of Asia, Africa and Americans. With their government's consent, some of these companies like Portuguese, Dutch, English and French had actively entered the Indian political and economic arena by the 18th century. They started interfering in the Indian politics to increase their economic gains. यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उसका ट्रेडिंग एक्टिविटीज का इम्पैक्ट इंडिया में भी आने लग गया था. उसके साथ साथ अफ्रीका, अमेरिका और सारी की सारी जो एशियन कंट्रीज थी उसमें भी दिखने लग गया था. फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश ये सारे के सारे एशियन कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया इन्वेड करने लग गए थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गए थे. James Mill's Periodization of Indian History. James Mill was a Scottish economist and political philosopher who viewed the history of India from the popular British viewpoint. According to this view, the Indians, like other Eastern societies, were culturally inferior to Europeans. He divided the history of India into Hindu, Muslim and British periods in order to highlight the religious nature of those times as also to draw the attention towards the great deeds
done by the British rulers in India. This basis of periodization of history is no longer accepted by modern historians. जेम्स मिल्स जो कि एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिक और एक फिलोसोफर रह चुके हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स में डिवाइड करा है. उन्होंने बाकी सारी ईस्टर्न कंट्रीज का रेफरेंस लेते हुए इंडिया की हिस्ट्री को भी मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, इन सारी रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड किया है. लेकिन करंट टाइम में जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. Modern Indian history, a brief overview. Modern Indian history tells us the history of India from the 18th century to the middle of the 20th century till India attained her independence in 1947. तो आपका 18th century से लेकर 20th century में जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था 1947 तक, वो पूरा का पूरा पीरियड आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है. This long period of Indian history includes the bitter conflict among the European trading companies which tried to capture political and economic power in India in the face of declining Mughal central authority. तो मुगल डायनेस्टी के एंड होते होते जब बाकी सारी कंट्रीज यहाँ पर इन्वेड करने के लिए आने लगी थी, वहां से एक्चुअल में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो गया था. The establishment of the English East India Company as the colonial rulers of India, M system of the British administration, economic exploitation and drain of wealth. उसके बाद आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे जो इंडिया की वेल्थ थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल पावर्स थी, वो सारी की सारी डिक्लाइन होने लग गई थी. The revolt of 1857, also termed as the first war of Indian independence, that took place as a result of a deep dissatisfaction generated among the Indian people against the rule. However, the revolt was suppressed by the militarily stronger British गवर्नमेंट. 1857 में जो आपका एक वॉर हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, वहां पे बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन ब्रिटिश की जो मिलिट्री पावर थी वो उस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था. Taking over the political control of India by the English crown and proclamation of Queen Victoria of England as the Empress of India in 1858. इस रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री में ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था और जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको एम्प्रेस बना दिया गया था हमारी कंट्री का. The beginning and spread of nationalism in the period extending from 1857 with the Indian exposure to better knowledge of the American, French and other revolutions which created new democratic societies in these countries. New nationalistic aspirations grew in India thanks to the exploitative nature of the British imperialism. उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडिया के सामने करा, उनके लिए किया, उनके अगेंस्ट में किया, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया था और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट और रिवोल्ट स्टार्ट होने लग गए थे. Quick facts. The British forced the people of their colonies in America to pay very heavy taxes, abide by trade restrictions and also denied them political rights. In the later half of 18th century, American people decided to revolt against British domination. This led to the famous Boston Tea Party. In 1776, the representatives of 13 colonies met at Philadelphia and adopted the Declaration of Independence. After that, America became an independent nation called the United States of America. तो अमेरिका पे भी ब्रिटिशर्स ने रूल करने की कोशिश करी थी. उन्होंने काफी सारे हेवी टैक्सेस लगाए थे, पॉलिटिकल राइट्स सारे छीन लिए थे, जिसके बाद अमेरिकन्स ने डिसाइड किया कि वो उनके डोमिनेशन के अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे. एज अ रिजल्ट 13 कॉलोनीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और ब्रिटिशर्स से उन्होंने आजादी पाई, जिसके बाद आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया था, इंडिपेंडेंट नेशन. अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल एंड इवन रेवोल्यूशनरी एंड सीक्रेट एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड. द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ग्रू फर्दर विद द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, हु involved the masses into the struggle to attain independence from the British rule. और इसके बाद धीरे धीरे एसोसिएशंस फॉर्म होने लग गई, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होने लग गई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करा जाए. उसके बाद ही और भी ज्यादा एनहांस हो गया था, स्ट्रेंथन हो गया था ये मूवमेंट, जब महात्मा गांधी जी वापस हमारे देश भारत में पहुंचे और उन्होंने सारे के सारे मासेस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करा.
A series of great statesmen and political leaders put all other issues aside for the sake of motherland. The people from all walks of life sacrificed their material want and came out on the streets. They suffered extreme brutalities of the rulers for the freedom of their country. India became free on 15th August 1947. उसके बाद अलग अलग प्रोसेशंस हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, पार्टीज फॉर्म हुई जिन्होंने अलग अलग तरीकों से अपनी पर्सनल इच्छाओं को साइड में रखकर अपने देश को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया और फाइनली इसका रिजल्ट हमें मिला 15 अगस्त 1947 को. Sources for the modern period. The advantages of sources for the modern period are that they are found in abundance and are also well preserved. मॉडर्न इंडिया की जितनी भी आपकी हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो बहुत सारे ह्यूज नंबर्स में हैं, आपको अलग अलग सोर्सेज से ये मिलते हैं और अच्छी तरीके से इनको प्रिजर्व करा गया है. The main sources for the modern period of Indian history are as follows. Primary sources include archaeological remains, original documents, photographs, newspapers, magazines, pamphlets and videotapes. तो सबसे पहला आपका सोर्स है जो प्राइमरी सोर्स में आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अलग अलग साइट से डिस्कवर हुए हैं, वीडियो टेप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, रिटन इंस्क्रिप्शंस हैं जो आपको मॉडर्न एज के बारे में बताते हैं. Secondary sources include reports, reviews, articles and printed books on primary sources. The sources for studying the modern period of Indian history are varied. उसके बाद secondary sources आते हैं जिसमें आपके reports, reviews, articles, अलग अलग books हैं जो आपको modern Indian history के बारे में information provide करती है. Archaeological sources include the buildings scattered in different parts of the country such as the Gateway of India, India Gate, Parliament House and the Rashtrapati Bhavan. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके वो सारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो हिस्ट्री का रेफरेंस देते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, इंडिया गेट जो कि आपका दिल्ली में है, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ये सारे आपके हिस्ट्री के रेफरेंसेस हैं. Original documents such as government orders and official correspondence are significant sources of historical information. These are well preserved in the archives and give us a first-hand knowledge of events. उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में उस टाइम पर लिखे गए थे, आर्टिकल्स आपके आए थे, अलग अलग आपके न्यूज़पेपर्स आए थे जो कि एज इट इज़ उन्हीं फॉर्म्स में रखे गए हैं. Newspapers, magazines, letters and pamphlets belonging to the period are also kept in libraries and archives. They were printed in different languages in different periods of time. Some of these newspapers are printed even today. Letters are especially important as they help us understand the prevailing situations from a personal point of view. उसके अलावा जो आपके उस टाइम के न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, वो भी एज इट इज़ प्रिजर्व कर दिए गए हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे. Printed books give us a detailed idea about the achievements in various fields such as art, literature, science and technology and medicine, etc. Books also tell us about social, economic and political conditions of a period. Biographies and autobiographies give an account of the life and thoughts of famous personalities. उसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं उस टाइम पे लिखे गई थी या फिर उस टाइम पे जो लोग मौजूद थे, इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कुछ हिस्ट्रीज लिखी, बुक्स लिखी, उससे भी हमको अलग अलग सोर्सेज के बारे में या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. Films, photographs and videotapes portray lives of famous people and events. The impression left after watching such films or video clippings are of more permanent nature as we see events with our own eyes. उसके अलावा उस टाइम पे जितनी भी मूवीज़ बनाई गई थी या फिर इंडिपेंडेंस के बाद उस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए जो मूवीज़ बनाई गई हैं, अलग अलग वीडियो टेप्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हैं. Quick facts. Achut Kanya is a Hindi film made in 1936. It is considered as one of the earliest super hits of the Indian film industry. It represents the ambitious, liberal, reformist state that saw its culmination in the Constitution of India, where inclusion and equality were promised to all. 1936 में अछूत कन्या नाम से एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मूवी रिलीज हुई थी जो कि टिल डेट तक बहुत ही बड़ी सुपरहिट मानी जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी दिखाई गई है उसको वो रिप्रेजेंट करती है. Recap. History is divided into 3 periods, viz. Ancient, medieval and modern. But the time frame or each period is not
uniform. Modern Indian history gives us the history of India from the 18th century to the middle of the 20th century till India attained her independence in 1947. The English East India Company established itself as the colonial rulers of India by 1765. India passed under the political control of Britain after the failure of the Indian Revolt of 1857, also called the First War of Indian Independence. The period extending from 1857 to 1947 was the period that also marked the beginning and spread of nationalism and launching of Indian freedom struggle. India became free on 15th August 1947. So students, इस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद आपका मॉडर्न एज स्टार्ट हो गया था, किस तरीके से अलग अलग प्रोटेस्ट करे गए और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो चुका था. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.